जय जगन्नाथ गोटे प्लस टू सेकेंड इयर कॉमर्स इवन भी प्लस थ्री रे काम लगे से चैप्टर हूँ फाइनल अकाउंट्स। तो ये फाइनल अकाउंट आज कवर अप करवा। ये फाइनल अकाउंट रो दुईटा पार्ट अच्छी, गोटे हूँ फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट आउ हूँ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। बट फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट आम जा। तो क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स, कौन पाई आम फाइनल अकाउंट्स पढ़ा एवं फाइनल अकाउंट पढ़ा द्वारा गोटे ऑर्गेनाइजेशन कौन बेनिफिट पाइबो आउ फाइनल अकाउंट्स केतेबेले प्रिपेयर करा से बाबद में टोटाली डिस्कशन करवा। फाइनल अकाउंट रे पार्ट कोन रोचे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट रो कंपोनेंट्स कौन कौन रोचे, तो से बाबद में डिस्कशन करवा। डिटेल्स स्किप करबनी, आगु चलो देखिबा कौन होची। तो फाइनल अकाउंट्स तो जतेबेले आमे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देले, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। When recording ends, recording means journal, जतबे recording काम सरी जाउची सेतबे लेजर स्टार्ट होची। जतबे लेजर काम से सरी जाउची तो सेतबे हमें बैलेंस करिया पई, बैलेंसिंग करिया पई हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करछे। जतबे ट्रायल बैलेंस काम सरी जाउची सेतबे बिजनेस रो काम होची, मोर बिजनेस रो परफॉर्मेंस कोन अछि, मोर बिजनेस रो ग्रोथ कोन अछि, मोर बिजनेस रो कोन पोजीशन अछि, तो सेति पे हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करछे। मन रखता पहिले फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर फ्रॉम लेजर अकाउंट, ledger account is prepared from journal, and the journal is prepared from identification transaction. That is called accounting cycle. Accounting cycle कहले that is starts with the identification of a transaction and ends with the preparation of a final accounts. तो वर्तमान समय आसुची हमें फाइनल अकाउंट पढ़िबा। तो से फाइनल अकाउंट्स इज आल्सो नोन एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Why it is called final account? Because the organization prepare finally means at the end of an accounting period, वर्ष शेषर जेतु से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करूची बा फाइनली प्रिपेयर करूची आफ्टर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, देन सेति पे हम एटा कहूचे फाइनल अकाउंट्स। एंड फाइनल अकाउंट्स को माने प्रिपेयर करिवे, दिस फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय सोल ट्रेडर बा सोल ट्रेडिंग बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप फार्म आउ गोटे पिले कंपनी। ए तीन जन जाक कौन करेंगे ना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। गोटे सोल ट्रेडिंग, गोटे पार्टनरशिप, गोटे कंपनी। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट रे कौन कौन कंपोनेंट्स रहउची, तार ऑब्जेक्टिव कौन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स is to know the financial performance of the business, is to know the financial position of the business, is to know the value of asset by asset liability and capital position of the business, is to know the how much amounts are spent by the organization during an accounting period, केते खर्च करूची, केते इनकम करूची, एसेट लायबिलिटी पोजीशन कोन अछि, तार फाइनेंशियल पोजीशन कोन अछि, तार परफॉर्मेंस कोन अछि। तो सेही जिंस जानिबा पई हमें पहिले फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करछे। एंड दिस फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु हैव एंगेज्ड विथ सोल ट्रेडिंग कंसर्न और एंगेज्ड विथ द पार्टनरशिप फार्म और एंगेज्ड विथ द कंपनी। तो आमे एबे डिस्कशन करिबा पहिले सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न रे किछि फार्म अछि जो माने भी एंगेज अछन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, the sole trading concern which is engaged with the manufacturing concern or engaged with the trading concern पहले मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहले जो माने जिंस तयारी करछन, जो माने जिंस तयारी करछन एबो ताको नेकी बिक्री करछन। किंतु ट्रेडिंग कंसर्न कहले जो माने अन्य ठु किनुछंती एवं अन्य को बिक्री करछंती, माने परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल। बट मैन्युफैक्चरिंग कहले तयारी करिबा, prepare the goods and sell the goods to the customers। तो इनके जदि आमे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कथा कहबा तो एई केस रे हमर चारिटा कंपोनेंट्स दोची। तो से चारटा कंपोनेंट्स हला कोन, गोटे हला पहिले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, गोटे हला ट्रेडिंग अकाउंट, गोटे हला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आ गोटे हला बैलेंस शीट स्टेटमेंट। Balance sheet statement. But if the organization is engaged with a trading concern, in that period this manufacturing account is not prepared. Here three components are there. One is the trading account, one is the profit and a loss account, one is the balance sheet, one is the balance sheet statement. But actually the final account is divided into two parts. One is the income statement.
Income statement means the statement of a profit and loss is also known as a profit loss account. Today we call it trading and a profit loss account. Trading and a profit loss account. Again, one part is statement of a balance sheet. But I'm just sole trading concern kotha kaiba. Sole trading concern এবং final account ର components ପଚାରିବା ଯଦି question ଆସିଛ what are the components of final accounts? The components of final accounts is one is manufacturing account, one is trading account, one is profit loss account, one is balance sheet statement যেটা কইছে আমি balance sheet বলি কইছে ओके तो बट बेसिकली हमें जब कहिबा तो एक्चुअली यार जो कंपोनेंट्स कोले दुईटा पार्ट डिवाइड करा होची गोटे हला इनकम स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट कोले दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वन इज बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स बट हमें जते कंपनी कथा जिबा आउ तीनटा अकाउंट अछि हमें पढिबा दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स बट हमें एबे पई हमें देखिबा दीटा पार्ट है गोटे इनकम स्टेटमेंट गोटे होछि बैलेंस शीट स्टेटमेंट बट एई पार्ट को सोल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रे हमें डिवाइड करछे एहुलिया हिसाब रे if the organization is engaged with the manufacturing concern they have to prepare manufacturing account then trading account then profit loss account one is a balance sheet but if this sole trading concern if they engage with the trading concern they have to prepare trading account profit loss account and a balance sheet the question is mu tamanku कहली पिलेबे what do you mean by final account mu तुमको कहि दोछि आउथरे कहि दोछि final account is also known as a financial statement which is prepared at the end of an accounting period to know the financial position as well as the financial performance of the business to know the position of a profit and a loss to know the asset liability and a capital position of the business वर्ष शेष रे गोटे asset liability capital position कोन अछि वर्ष शेष रे तार प्रॉफिट होउची कि लॉस होउची तो एई दिन से जानिबा पई प्रतिटी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन से सोल ट्रेडिंग कंसर्न से एंगेज थाउ किबा पार्टनरशिप से एंगेज थाउ किबा कंपनी से एंगेज हो से माने प्रिपेयर करथांती तो से दीटा दिन से जानिया पई गोटेला फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस वन इज फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ए दीटा को प्रिपेयर करबा द्वारा गोटे ऑर्गेनाइजेशन इजीली जानि परिबो डिसीजन नै परिबो whether they close the business whether they modify the business whether they man that means they will take decision ता बिजनेस में से माने डिसीजन नै परिबे से माने बिजनेस को बंद करिवे ना आगु को हमें भलसे आहुरी टिके कोन कोन करी के आगु को बढ़िया पे पड़िबो तो सेति पई फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करा होची फाइनल अकाउंट रो इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटा गोटे स्टेटमेंट बोली कहूचे बट हमें एबे जेतल सोल ट्रेडिंग कंडीशन कथा कहूचे एई दिन सारा रहूची बट हमें पार्टनरशिप कथा जे कहबा पार्टनरशिप कथा से पार्टनरशिप रे वन मोर अकाउंट इज प्रिपेयर वन इज ट्रेडिंग अकाउंट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पर आसीबो वन इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एटा होचे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रे पार्टनरशिप रे आसीबो बट आमे एबे जिबा कोठी की ना ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तालो व्हाट डू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन पहिले यार सिस्टमैटिकल अछि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रो मेन ऑब्जेक्टिव होची टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यार मेन ऑब्जेक्टिव होची टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड cost of a goods sold a cost of goods sold we are calculate the main objective of a trading account is to find out the gross profit and the gross loss of the business either gross profit hai pare gross loss madhya hai pare the main objective of profit and loss account is to net profit or net loss of the business and the main objective of a balance sheet statement or balance sheet is to know the financial position of the business तो ये चारिटा अगर ऑब्जेक्टिव कहली तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कोन पई प्रिपेयर करा जिवो म तो मन कहली जे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करा जिवो एथि पई जे जदी बिजनेस ता एंगेज अछि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दैट मींस दे हैव टू प्रिपेयर द गुड्स एंड सेल द गुड्स बुझा पइला तो जिनस तयारी करछि जिनस तयारी करछि निहाती बाबर तार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानिबा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानिबा पई कोन करबा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू तार ओपनिंग स्टॉक केते अछि देखिबा सेथरे परचेज ऐड करबा क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मध्ये पाई परिबा तनो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कइले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज जदी किछि एक्सपेंस अछि ताकू मध्ये ऐड करि परिबा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनडायरेक्टली हम कहि परिबा जे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कइले सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट that is called
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये पार्ट लिभेली तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयारी करबा तो तार मेन ऑब्जेक्टिव होची कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होची कोन ना सेल्स सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स कहले पिले नेट सेल्स कहले सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कले तो आम नेट सेल पाइबा एवं नेट सेल्स रु जदि आम कौन करबा ना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करबा ताला आम पाइबा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शॉर्टकट कर देली बा अदर सेंस रे आम कहि परियो कोन ना ओपनिंग स्टॉक जहां भी ओपनिंग स्टॉक अछि सेथरा ऐड करिया पिले नेट परचेज ऐड करिया कोन नेट परचेज ऐड करिबा नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न ऐड करिबा जदि किछि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अछि डायरेक्ट एक्सपेंसेस पिले डायरेक्ट एक्सपेंसेस भीतर कोन आसुची ना वेजेस आसुची फ्रेट आसुची ऑक्ट्री आसुची कैरेज इनवर्ड आसुची एरा सब होची रॉयल्टी आसुची एरा सब होची डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करिबा एवं एठी लेस करिया क्लोजिंग स्टॉक जदि क्लोजिंग स्टॉक माइनस करिबा तो हमें जहा पाइबा सेटा होची कोन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एई वे रे हमें कैलकुलेट करि परिबा तो ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड केते बेले कैलकुलेट करिबा व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इन एंगेज्ड विथ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दैट इज कॉल्ड कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एवं तार ऑब्जेक्टिव होच कोन ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओके देन जिबा ट्रेडिंग अकाउंट पिले ट्रेडिंग अकाउंट कहले पिले पट लिभि दूची काई नै पट दिन सर से अछि तो ट्रेडिंग अकाउंट माने कौन व्हाट डू मीन बाय ट्रेडिंग अकाउंट माने कौन ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्जेक्टिव कौन ना ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट whose main objective is to find out to gross profit or gross loss of the business and that gross profit and gross loss is not a real profit of the business this is called book profit मन रखता पहले gross profit is also known as book profit जोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसीयो तुमको शॉर्ट क्वेश्चन हेल्प करबो this is not a real profit write down note करो पहले gross profit is also known as book profit this is not a real profit that not will be distributed among the owners that means the owners will not taking the book profit or gross profit by gross profit नबो नहीं and जत्ते बेला हमें gross profit कैलकुलेट करू से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करू से डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओके तो ट्रेडिंग अकाउंट केबे प्रिपेयर करा जाउची ना ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड गोटे पर्टिकुलर पीरियड रे ही हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करछे ट्रेडिंग अकाउंट माने कोन हम कहली ट्रेडिंग अकाउंट कहले इट इज एन अकाउंट whose main objective to find out gross profit and gross loss of the business gross profit means that is called book profit this is not a real profit and this will not taken over by the owners or sole proprietors okay तो gross profit हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करछे तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करछे ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल कंसीडर व्हेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कोन करछे ना कंसीडर करछे जते हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करछे तो ट्रेडिंग अकाउंट रे हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट माने कोन ग्रॉस प्रॉफिट हम एठी लिखा हिच पिले नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तल जदी मु एठी कोन करबी ना नेट सेल्स रु कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करबी ताले मु कोन पाइबी ग्रॉस प्रॉफिट पाइबी ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओके तो एई ग्रॉस प्रॉफिट को अकाउंट प्रिपेयर करबा द्वारा हेताय ट्रेडिंग अकाउंट गोटे क्वेश्चन आसीबो जे ट्रेडिंग अकाउंट केते बेले प्रिपेयर करा जिवो ना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पर तार मेन ऑब्जेक्टिव कोन ना टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट रे कोन शो होबो ना सेम ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक सेल्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो अकाउंट प्रिपेयर होतला सेम अकाउंट एठी प्रिपेयर होबो सेम टर्म पड़िबो बट डिफरेंस होची जे केवल सेल्स टा को हमें गोटे शो करिया सेल्स आसिले ही ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आसीबो नॉन नहीं आसीबो नाही तो ट्रेडिंग अकाउंट रो जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस होची सेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होबो ठीक अछि तो ट्रेडिंग अकाउंट ओवर देन हमें जिबा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट केते बेले प्रिपेयर करा जिवो ना आफ्टर ट्रेडिंग तो ये पिले कनेक्शन अछि एटा या पर प्रिपेयर करा जिवो एटा या पर प्रिपेयर करा जिवो एटा या पर प्रिपेयर करा जिवो
आगो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देन ट्रेडिंग अकाउंट देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट देन बैलेंस शीट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टा ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर हो ट्रेडिंग अकाउंट रो बैलेंसिंग फिगर टा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रो बैलेंसिंग फिगर टा बैलेंस शीट की ट्रांसफर हो तो क्वेश्चन इज जे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माने कौन ना सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रो मेन ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस प्रथम पॉइंट दुई नंबर पॉइंट फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट तीन नंबर पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेल्प्स for the preparation of a balance sheet. Fourth, profit and loss account is prepared on a particular period. Fifth, profit and loss account shows indirect expenses and indirect income. If indirect income is more than the indirect expenses, that is called net profit. If indirect expenses is more than the indirect income, that is called net loss. So ये जो net profit हो, net loss हो, this is the real profit. This is the real profit. This will be taken by the owner, sole proprietor, sole trader, not the book profit. Not a book profit. तेणु book profit कहले gross profit सहित समान. Net profit कहले real profit सहित समान. तेणु book profit और net profit मध्य difference पाओ. पहले परीक्षा एमती आसीबो जे what is the difference between gross profit and a net profit? What is the difference between trading account and a profit and loss account? एभले किछ क्वेश्चन आसीबो त मानु कहि देली कहि छैलानी. So then what next होचे balance sheet. What do you mean by balance sheet? Balance sheet is a statement. Balance sheet is not an account. Balance sheet is a statement which is prepared after profit and loss account. Which is prepared after profit and a loss account to know the financial position of the business, to know the position of asset, liability and a capital. Balance sheet is prepared at the end of an accounting period कहले भी ठीक होबो but balance sheet is prepared on a particular date मन रखता पहिले जेतले balance sheet कथा कहबा हमें जे balance sheet कथा कहबा balance sheet गोटे कोन ना balance sheet गोटे statement केबे प्रिपेयर करा जबा at a particular date or a time or हम कहि परबा at the end of an accounting period कौन जानिया पाई टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन जानिया पाई टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन माने एसेट लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल यार पोजीशन जानिया पाई बैलेंस शीट केते बेले प्रिपेयर करा जिवो ना प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओके तो बैलेंस शीट ए जो कहली तो मानको 1 2 3 4 पॉइंट बैलेंस शीट रे कोन शो होबो ना एसेट लायबिलिटी ये गोटे पॉइंट मध्य कर परिबा पहिले बैलेंस शीट शोज एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल बैलेंस शीट केबे प्रिपेयर करा होची एट ए पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम केते बेले प्रिपेयर करा होची आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बैलेंस शीट गोटे स्टेटमेंट एटा फाइनेंशियल पोजीशन जानिया पई हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करछ जदि हमें कंपैरिजन करबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परीक्षा आसीबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट व्हाट इज द डिफरेंस इज ट्रायल बैलेंस shows the arithmetically accuracy of the books of accounts हमें बैलेंस करछे but balance sheet shows the financial position of the business trial balance helps for the preparation of balance sheet but ledger helps for the preparation of a trial balance that means trial balance ledger ru करछे एवं एथरे हमें balance sheet trial balance ता ledger ru करछे एवं balance sheet ता हमें करछे कोठु ना trial balance as well as some additional information is required to accurate profit and loss of the business of accurate profit and loss जानिया पई आउ किछि additional information जोटा with adjustment रे हमें कहबा जोटा कि हमर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो accrued income हो हमर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो डेप्रिसिएशन हो किबा गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो ए सब दिन मध्य हमर अछि जोटा कि गोटे बिजनेस रो एक्यूरेसी पोजीशन जानिया पई बिजनेस रो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस जानिया पई हम से एडजस्टमेंट करिथौ ओके ई होछि बैलेंस शीट जदि मु सेम दिन प्रॉफिट लॉस कथा कहया ताले प्रॉफिट लॉस कथा कहले कोन हो सेम जता हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट कथा कहबा ना प्रॉफिट लॉस इज एन अकाउंट गोटे प्रिपेयर आफ्टर एटा केबे प्रिपेयर करा जिवो ना आफ्टर ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड रे प्रिपेयर करा जिवो कोन जानिया पई क्वेश्चन रो नेट प्रॉफिट और
नेट लॉस जानिबा पे हमें प्रिपेयर करिया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ए जगह रे कोन कोन शो हबो ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम शो करा जिवो एटा केते बेले प्रिपेयर करा जिवो ना आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट तुम जदि परीक्षा रे पढिबो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट तुम कोन लिखिबो ना बैलेंस शीट स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस इज एन अकाउंट बैलेंस शीट प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट और टाइम प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ए पर्टिकुलर पीरियड balance sheet shows the financial position of the business profit and loss account shows the net profit and net loss of the business balance sheet shows asset liability and capital profit loss account shows indirect expenses indirect income balance sheet is prepared after profit and loss account and a profit and loss prepared after trading account that means the ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତମାନେ କହିବ there is no balance in balance sheet जेहेतु ଗୋଟେ स्टेटमेंट तार कोनोस प्रकार balance नाही but profit and loss account ର balance ଅଛି से balance टा होची net profit and net loss and that will be transferred to the balance sheet adjusted with the capital or owner's equity जदि प्रॉफिट होची नेट प्रॉफिट ताले कैपिटल रे ऐड करिवो बैलेंस शीट रे जदि लॉस होची ताले कैपिटल रो माइनस करिवो बैलेंस शीट रे this is the difference between profit and loss and balance sheet also same difference between trading and profit and loss account करि परिवो again जदि हमें जिबा जे मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट ताले ओके बैलेंस शीट कोन बुझिलो प्रॉफिट लॉस बुझिलो ट्रेडिंग अकाउंट तार ऑब्जेक्टिव कोन डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम टा कोठी कंसीडर करा जिवो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टा हम कंसीडर करबा हम एतरा ट्रेडिंग अकाउंट माउथरे कहूची तुमको एई क्वेश्चन रे तीनटा डिफरेंस देखियो पड़िबो गोटेला ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट मध्ये डिफरेंस गोटेला प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मध्ये डिफरेंस गोटे होची बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस भीतर डिफरेंस आ गोटेला ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मध्ये डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट कहले बुक प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहले रियल प्रॉफिट gross profit will not be distributed but the net profit will be distributed gross profit is prepared from trading account net profit is prepared from profit and loss account gross profit is transferred to the profit and loss account net profit is transferred to the balance sheet this is called difference the gross profit and net profit એટલે ભૂલીବ ନାହିଁ ଏ क्वेश्चन एरा तुमको बहुत मात्रा रे सहयोग करिवो तो जते बळे आ गोटे जिंस रहिला जोटे कि मु कवर अप करबी दैट इज कॉल्ड व्हाट बैलेंस शीट ए बैलेंस शीट रे आमे आमर कौन प्रकार मेथड नाही जे ए बिजनेस टा अरेंजमेंट करिया पई बट ए जो सीक्वेंस हिसाब रे एसेट और लायबिलिटी को अरेंज करा जाय थाए ताको कहया पले मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट गोटे टर्म मन रखियो पले मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहले कोन मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट रो मीनिंग होची marshalling of balance sheet means the arrangement of asset liability and capital the arrangement of asset liability or capital or sequence of asset liability or capital is called balance sheet a balance sheet जो हम कोर्स that is called marshalling of balance sheet तो सेथरे दीटा मेथड अछि in the order of permanency और in the order of liquidity दीटा मेथड अछि तो परमानेंसी हिसाब रे आमे बैलेंस शीट रो फॉर्मेट रे आमे आगो रखिबा कैपिटल देन फिक्स्ड लायबिलिटी देन करेंट लायबिलिटी एवं जदि एसेट कथा कहिया आगो फिक्स्ड एसेट तापर करेंट एसेट बट लिक्विडिटी हिसाब रे आमे रखिया आगो करेंट लायबिलिटी देन फिक्स्ड लायबिलिटी देन कैपिटल एपट रखियो पिले करेंट एसेट फिक्स्ड एसेट शॉर्टकट रे लिखिछ पिले स्किप कले बुझी परिबो नै सीए एफए कोन जानि परिबो नै तनो capital fixed liability current liability fixed asset current asset that is called the arrangement of asset and liability on the basis of permanency gote permanency method permanent method out is liquidity in the order of liquidity parikara so what do you mean by balance marshalling of balance sheet tam likhibo marshalling of balance sheet means the arrangement of asset liability and capital either in the order of permanency or in the order of liquidity that is called marshalling of balance sheet so फाइनल तो मानु कहया पे जाउची दैट इज व्हाट हमें जो पढिल एक्चुअली जे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एरा ट्रेडिंग अकाउंट रे फॉर्मेट रछि ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट जानिले ही त माने जानि परिबो किंतु मु त मानु कहि दोछि पिले एसेट मींस व्हाट एसेट कहले रिसोर्सेस बहुत गुडा टाइप रो एसेट्स अछि एसेट कहले रिसोर्सेस व्हिच इज ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओन्ड बाय द normal people normal person it is owned by the organization jota organization द्वारा own कराइते and that will be
used in the organization for production purpose and not for resale purpose. If it is used for production purpose, that is called asset. ମୁଁ ଦୁଇଟା କହିଲି ଯେ asset is a resources which is owned by the organization and that asset will be used in the organization for production purpose and which have a limited life. जार limited period अछि हम कहि परिबन जे सेटा long वर्ष पय हमें यूज होबो केवल लैंड और बिल्डिंग को छाड़ देला परे. तो से एसेट को एक्चुअली एसेट कहले दुईटा गोटेला करेंट एसेट आ गोटेला नॉन करेंट एसेट. करेंट एसेट नॉन करेंट एसेट बट बेसिकली बट जदि सोल ट्रेडिंग कथा कहबा हमें जो एठी कहले फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट कहले बहुत गुडाई अछि बहुत पार्ट अछि. फिक्स्ड एसेट इज नोन एंड ब्लॉक एसेट मन रख अपले फिक्स्ड एसेट को हमें कहि परिया कोन फिक्स्ड एसेट को हमें आउट कहिया पले शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक एसेट. न बुझी पाइले पचारिबो ब्लॉक एसेट मध्ये वन मार्कर बहुत इंपोर्टेंट जे बुक प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज ए ग्रॉस प्रॉफिट से बुलिया फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड ब्लॉक एसेट सबुट इंपोर्टेंट जदि नोट लिखिछ लिखि दियो नोट डाउन कर पिले. तो गोटेला फिक्स्ड एसेट ए फिक्स्ड एसेट पुनी दुईटा गोटेला टैंजिबल फिक्स्ड एसेट गोटेला इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट या भी तो शॉर्ट क्वेश्चन नो डाउट आसीओ पिले. tangible fixed asset intangible land building plant machinery furniture that is comes under tangible fixed assets. But goodwill, copyright, patent, trademark that is comes under intangible fixed asset which cannot be touched and seen but only feel, that is called intangible. Okay, tangible koile which can be touched, seen and feel. Again the asset is current asset. Current asset which can current asset koile kona which can be easily converted into cash जोटा cash रे convert हेई परिबो बा which gives benefit for less than 1 year जोटा गोटे ऑर्गेनाइजेशन को गोटी वर्ष पय बेनिफिट दबो. that comes under stock हो debtor हो bills receivable हो किबा हमरो prepaid expenses हो accrued income हो that is comes under short term assets advance जोटा करछे current asset. आउ मध्ये asset अछि that is wasting asset. वेस्टिंग एसेट कहले जो एसेट ता हमें ग्रेजुअली यूज करबा द्वारा तार वैल्यू का कमी जाए आ फाइनली एग्जॉस्ट हो जाए दैट मींस सरी जाए दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग एसेट एग्जांपल हमें माइन दे परिबा ऑयल दे परिबा कोल दे परिबा गोटेला वेस्टिंग एसेट आ वेस्टिंग एसेट ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाय ताको कहया डिप्लेशन मन रखता डेप्रिसिएशन चार्ज है डिप्लेशन वेस्टिंग एसेट एग्जांपल कोन कहले ना माइन हो ऑयल हो कोल हो एरा हो वेस्टिंग एसेट ग्रेजुअली सॉरी डिक्रीज हो जाए फाइनली एग्जॉस्टेड हो जाए दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग एसेट. करेंट एसेट रो एग्जांपल हमें कहले कोन ना स्टॉक हो सन्डी डेटर हो बिल्स रिसीवेबल हो किबा हमर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो अक्रूड इनकम हो ये सब होची डेटर. ओके देन आउ एसेट अछि लिक्विड एसेट अछि नॉन लिक्विड एसेट अछि बहुत गुडा फ्लोटिंग एसेट अछि कंटीजेंट एसेट अछि एरा. ओके fictitious asset अछि fictitious asset कहले asset having no value or which cannot be realized जोटा के हम रियलाइज करि परिबा नै रीसेल करि परिबा नै लाइक एग्जांपल preliminary expenses हो discount on issue of share हो that is comes under which fictitious assets त कुछ हमें fictitious asset बहुत गुडा एसेट अछि त मानु कहली बट एक्चुअली ए एसेट कथा कहले दुईटा पार्ट डिवाइड कराइ छै गोटेला करंट एसेट आउटेला नॉन करेंट एसेट कोटा एवं नॉन करेंट एसेट कोटा एथिक करेंट दिखाउन CURRENT गोटेला करेंट एसेट आउटेला नॉन करेंट एसेट ठीक सेही बलिया लायबिलिटी मध्ये अछि ए जदी लायबिलिटी कथा कहि आमे लायबिलिटी कथा कहिबा तो ए जो लायबिलिटी अछि लायबिलिटी दीटा करेंट आउटेला नॉन करेंट लायबिलिटी आउटेला नॉन करेंट लायबिलिटी बट आमे जदी डिवाइड करी कहिया फिक्स्ड लायबिलिटी अछि करेंट लायबिलिटी अछि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अछि कंटीजेंट लायबिलिटी अछि बहुत गुडा लायबिलिटी अछि. फिक्स्ड लायबिलिटी कहले द लायबिलिटी माने कोन लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट टू द आउटसाइड पार्टीज ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट टू द आउटसाइड पार्टीज तो हम आउटसाइड लोक मान को पेमेंट करू छे जोटा को पेमेंट करबा को अछि व्हिच कैन बी पेएबल नॉट पेड इफ इट इज पेड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस व्हिच कैन बी पेएबल जोटा हमको पेमेंट करबा को अछि दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी. obligation of a payment to the outside parties that is called liability. ए liability कोन ना जो liability को पेमेंट करबा पई हमु गोटे वर्ष अधिक टाइम लागिवो ता कोचे फिक्स्ड लायबिलिटी लाइक लॉन्ग टर्म लोन हो किबा डिबेंचर हो गोटे वर्ष भीतर से लायबिलिटी को कवर अप करि हबो नाही बा सेटलमेंट करि हबो नाही तो जो लायबिलिटी को हमको पेमेंट करिया पई गोटे वर्ष अधिक समय लागिवो ता कोया फिक्स्ड लायबिलिटी जो लायबिलिटी हम गोटे वर्ष भीतर पेमेंट कर दवा दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी मींस लायबिलिटी व्हिच कैन बी पेएबल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड
फिक्स लायबिलिटी एग्जांपल कहली कोन डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन डिबेंचर्स बट करेंट लायबिलिटी एग्जांपल हे परिबो कोन ना हमर बैंक ओवरड्राफ्ट हे परिबो दैट इज करेंट सन्ड्री क्रेडिटर हे परिबो शॉर्ट टर्म लोन हे परिबो ई होज कोन करेंट लायबिलिटी एग्जांपल ओके तो आउ गोटे रही गला कंटीजेंट लायबिलिटी मैं कही दूची गोटे हला फिक्स लायबिलिटी गोटे हला करेंट लायबिलिटी आउ गोटे पे अछि कोन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट लायबिलिटी कहले हैपेनिंग और नॉन हैपेनिंग ऑफ एन इवेंट्स जोटा हमें फ्यूचर रे देई पारे न देई पारे जेंत कहली फाइनेंशियल केस पेंडिंग अगेंस्ट हाई कोर्ट गोटे हाई कोर्ट रे गोटे फाइनेंशियल केस टे पेंडिंग अछि तो जते बेले जो मोमेंट डाकिले मध्ये हमको पेमेंट करिया को पड़िबो जीवाको पड़िबो एवं किछि पैसा दबाको पड़िबो दैट इज कम्स अंडर कंटीजेंट लायबिलिटी तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइनल अकाउंट तो एकु बेस करिकि आमे फाइनल अकाउंट करिबा एवं फाइनल अकाउंट करिबा द्वारा गोटे बिजनेस इजीली तार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस as well as फाइनेंशियल पोजीशन जानि परिबो केबे जानि परिबो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड वर्ष शेष रे एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग पीरियड एंड रे जहाँ द्वारा कि से डिसीजन नहीं परिबो जे बिजनेस को से बंद करिवो ना आउ कोठी ट्रांसफर करिवो ना बिजनेस को बढ़ेइबो ना आउ कोठी ब्रांच ओपन करिवो ना ता एम्प्लॉय मान को सजेशन दबो जे एई वे रे काम करिया बोली ठीक अछि दिस इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स ओके थैंक यू